Hello everyone, Assalamu alaikum. Myself Aakash and welcome back to my YouTube channel. आज हम हेक की वेबसाइट पर हायर एजुकेशन कमीशन के ई सर्विसेज पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे एंड हाउ एक्चुअली यू हैव टू avail the opportunity from the digital learning and skills enrichment इनिशिएटिव जिससे कि आपको कोर्सेरा की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशन विथ लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं. तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल योर इंफॉर्मेशन ऑन दिस sign up form and you can get this sign up form by going to HEC e-services and when you will see sign in and sign up. So you have to sign up if you don't have already any account of HEC. So let's fill in this information as I have filled. So we have to submit this information. Let's go and submit. Now you will receive a code on your email that you have to type here, and you will also receive a code on your telephone number that you just gave. So you have to type the code here that you receive. आपकी ईमेल पे भी कोड आएगा, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, and you will also receive a code on your number. Let's go and verify. So now our account has been verified, and by typing the CNIC that we had entered before, we can get into our HEC e-portal account. So I am going to type in my CNIC. Okay, sign in. Okay, I have been signed in successfully, and now as you sign in, you are going to have this look at the first site. Welcome to HEC e-services portal. Okay, so next and next. Now here is what the portal is offering us. Okay guys, so here is our account. Now right here you can go and at my profile and fill up all your relevant information. Okay, so your title is Mrs. or Mr. or engineer, whatever you are, doctor, you have to just type here. Okay, so middle name no. इसमें से कुछ information हमारी already filled up होती है. You just have to fill the information that has not been filled. Okay, तो जैसे ही आप fill करेंगे तो इसको save and close कर देना है. Okay, after you are done with personal information, go to address information and fill in your address, country, city where you are residing right now and save address. जैसे ही आप इनको fill up करेंगे तो आपके जो ये एड्रेसेस हैं वो आ जाएंगे. उसके बाद you have to fill up your education details, and then this is personal information, address information or education information are the most important ones. And then when you feel like you need to change your password, you can go right here and type your current password, new, and confirm password. Your password will be changed. Okay, you can also change your email address if you want to in the future, and also your telephone number. So we are done with this. Now let's go and sign up on DLSEI platform. Now we are on DLSEI portal, which is डिजिटल लर्निंग एंड स्किल्स इनरिचमेंट इनिशिएटिव, जिसमें आपको एक्सेस दी जाती है कोर्सेज की और सर्टिफिकेट्स की फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें हाईएस्ट रैंक्ड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑनलाइन कोर्सेज की एक्सेस हमें दी जाती है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन. तो दोस्तों, आफ्टर यू आर डन विद एवरीथिंग, जब आप अपना अकाउंट बना लें, उसके बाद कम्प्लीटली ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन अपनी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आना है एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर ई कोर्सेज. अप्लाई फॉर ई कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र टाइप देना है स्टूडेंट, एंड देन बाय सिलेक्टिंग एनी कैटेगरी यू आर इसको प्रोसीड करना है.
प्रोसीड करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे टाइप करना है, एंड देन कैंपस जो जिसमें पर्टिकुलर में आप पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। देन डिसिप्लिन, आपको अपना स्टडी का फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होगा तो आपको ये डालना है, अगर अदरवाइज़ तो आप दूसरा कोई डाल सकते हैं जो है आपका। देन अगेन यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो जिस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसका डिपार्टमेंट, एंड देन प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड इन जिसमें हैं आप। देन आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डालनी है, लेवल और सेमेस्टर जिसमें आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जो नंबर आपको मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। एंड डेट ऑफ एडमिशन आपको एनरोलमेंट कार्ड पे आपके लिखी होगी कि कब आपको एडमिट किया गया था यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इस छोटे वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप अपनी जो डेट होगी वो यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसका ये सीन है कि जो कोर्सेज होंगे और जो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उसके मुताबिक आपको रिकमेंडेशंस मिलती रहेंगी ई पोर्टल पे। उसके बाद आपको यहाँ पे, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सेकेंडरी ईमेल टाइप करनी है, इंस्टीट्यूट का या सेकेंडरी ईमेल टाइप करनी है। आपको इंस्टीट्यूट का, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, उसकी एक पर्टिकुलर edu.pk पे एंड होने वाली जीमेल हमें प्रोवाइड की गई है, तो वो हमें यहाँ पे टाइप करनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर इंस्टीट्यूट सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, जो एग्जांपल है वो ये है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एंड क्या किस पे हो रहा है, edu.pk पे, और आपने इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपना अटैच कर सकते हैं, जिनसे ट्रांसक्रिप्ट हो गया आपका, या डिग्री हो गई, या यूनिवर्सिटी का कार्ड हो गया, या एडमिशन लेटर हो गया, इनमें से कोई भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब आप व्हेन यू आर डन विथ दिस इंफॉर्मेशन, आपने जब ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी हो तो आपको सबमिट फॉर्म कर देना है, और जो फोकल पर्सन होगा यूनिवर्सिटी का आपकी, वो इसको वेरीफाई करेगा, एंड देन आपको HEC की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगी, जिस पे आप जाके कोर्सेरा पे अकाउंट बना के और कोई भी कोर्स, किसी भी कोर्स में एनरोल करके उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन यू कैन रिसीव your certification. So this was it all about how you can create an account on HEC website, and how you can get enrolled in e-courses provided by Coursera free of cost. So thank you so much for watching, and please do subscribe to this channel, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.